में काफी ज्यादा जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अब मूव कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, जहां We request Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Railway Minister, to felicitate our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi garu by presenting a charial painting depicting Bathukamma festival. Charial painting is a unique art form native to Telangana, and Bathukamma is a colorful floral festival of Telangana which has over the years become a symbol of its culture and identity. The festival has been beautifully captured in the painting. The charial scroll painting is a unique art, unique to this state. अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन करते हैं कि वे हरी झंडी दिखाकर नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करें। The Secunderabad Tirupati Vande Bharat Express is ready to take off on its inaugural run. This is a wonderful gift to the people of two Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh. This is a momentous occasion and a proud moment to be cherished. The train has started on its auspicious journey to Tirupati, the abode of Lord Venkateshwara Swami. हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी के संकेत पर वंदे भारत एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। It's a happy moment for the people of two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh. మన తెలుగు ప్రజలకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరుమలకు ఈ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ మరింత వేగవంతంగా చేర్చనుంది. The two Telugu states of Telangana and Andhra Pradesh are about to see their connect getting stronger thanks to India's fully indigenous semi-high-speed train Vande Bharat Express. The city of Hyderabad is getting linked with Tirupati, gateway to the abode of Lord Venkateshwara and Goddess Padmavati, by the fastest and most comfortable rail service offering best-in-class travel experience. The commencement of the new Vande Bharat Express, second such service for Telangana and Andhra Pradesh, is a testimony of the transformational path embarked by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi garu towards modernizing rail infrastructure to attain international standards and showcase a giant leap in the transport scenario of India. The connectivity also espouses the commitment of Indian Railways to provide utmost convenience to pilgrims. यह वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जनता के लिए एक अनुपम भेंट है. Honorable Prime Minister Sir is greeting the audience with a radiant smile and a cheerful smile and a wave. And the people are very excited and enthusiastic to see and greet our beloved Prime Minister. यह वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को 3 माह की अल्प अवधि में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। साउथ सेंट्रल रेल। तो ये आप तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखा अभी कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस ट्रेन को, और उससे पहले की ये तस्वीरें जब इस ट्रेन में जो मौजूद लोग थे, जो छात्र थे, उनके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया, उन बच्चों की पीठ पर अपने हाथे रखकर उनकी पीठ थपथपाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन तेलंगाना के लिए। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये
जो ट्रेन है सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसके जरिए आईटी सिटी हम जानते हैं हैदराबाद को कहा जाता है, आईटी सिटी हैदराबाद और धार्मिक स्थल तिरुपति को जोड़ने की कोशिश आज इस ट्रेन के जरिए की गई है। और इससे हैदराबाद से तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्दी आने जाने में काफी मदद मिलेगी। ये ट्रेन ऐसा कहा जा रहा है कि हफ्ते में 6 दिन यानी केवल मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चलेगी और सुबह 6 बजे सिकंदराबाद से चलकर ये दिन में 2:30 बजे के आसपास तिरुपति पहुंचेगी और तिरुपति से फिर 3:15 बजे के आसपास ये चलकर रात को 11:45 बजे के आसपास ये सिकंदराबाद पहुंचेगी और ये ट्रेन नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर भी रुकेगी। तो ये आप तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया। And there you have it, viewers, the Vande Bharat Express being flagged off between Secunderabad and Tirupati, and the Prime Minister in fact has spoken about the Vande Bharat Express from time to time and has spoken about the development of the railways in the country and how that helps in the connectivity push and the developmental push in the country as well, and has time and time again reiterated the importance of the railways as well. And once again we see those images of the Vande Bharat Express being flagged off by the Prime Minister there in Secunderabad at the Secunderabad railway station. We just saw a few minutes ago how the Prime Minister had landed at the airport, in fact, and then we had seen how he was being received by the BJP leadership, as the Chief Minister KCR had stated that he will not be going to the airport to receive the Prime Minister. Not just that, he will not be attending all of these developmental events that we are seeing on our screens right now, where the Prime Minister is present to, in fact, inaugurate and dedicate to the nation projects worth rupees 11,300 crores. And that also includes the Vande Bharat Express that is being flagged off between Secunderabad and Tirupati. And of course, apart from this, various other developmental projects through the day that we will get to see the images of the Prime Minister there in Secunderabad, who will be inaugurating and dedicating to the nation all of these developmental projects worth rupees more than 11,300 crores. And even as the politics in fact continues in the backdrop, as we had seen the Chief Minister KCR stating that he will not be attending all of these developmental projects and events. Let me also bring in my colleague Aneri, who's been on the ground reporting on this story for us. Aneri, speak to us over these visuals that we're picking up of the Prime Minister flagging off the Vande Bharat Express. And first, if you could talk to us about the entire itinerary and the developmental projects that are going to be inaugurated today by the Prime Minister, dedicated to the nation by the Prime Minister. And also, if you could speak to us about the politics in the backdrop of these events, where the Chief Minister claiming that he will be abstaining from meeting with the Prime Minister. Well, that's right, Priyanka. We have been seeing that Prime Minister Narendra Modi, who was landed some time back, has now arrived at the Secunderabad railway station, where he is flagged off the Vande Bharat train. And also at the same time, we do not see the Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao attending the event, as the BJP leaders and the Union Minister V. Kishan Reddy also had very clearly stated that invitations have been sent to everyone. All the protocol is being followed. But then we still see the CM KCR has not attended the program, and also at the same time he did not receive Prime Minister at the Begumpet airport, whereas it was Telangana Minister Talsani Srinivas Yadav who had welcomed Prime Minister Narendra Modi at the airport. Well, definitely the politics between the state and centre has been escalating time and again. And also, Priyanka, not to forget, the Prime Minister's visit comes just after a series of events which had taken place from the time BJP State President Bandi Sanjay was arrested till the time where we see that he was granted bail and walked out of Karimnagar jail. But then we also see that how the BRS leaders have been erecting posters across Hyderabad, hitting out at Prime Minister Narendra Modi says Parivar welcomes Modi ji in Hyderabad, where there are posters of BJP leaders along with their
some relative who holds a post at any organization or at any other state. But now we also have been seeing that the BJP has been saying that this is not a political event. This is for the development of the state, and that is the reason why we are seeing that here about 11,300 crore rupees project will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Various programs, various foundation stone laying ceremony will be done by Prime Minister Narendra Modi here in Hyderabad. That's right, Aneri. And as we do track the number of developmental projects that are all set to be inaugurated by the Prime Minister there in Secunderabad, as he is in fact flagging off the Vande Bharat Express once again. And we are tracking the itinerary of the Prime Minister as well, and various events that he is going to be taking a part in as well. And Aneri, if you could speak to us a little bit in detail about these projects. We have spoken about the political face-off that is going on in the backdrop of these images that we get to see of the developmental push by the Prime Minister there in Secunderabad. But speak to us a little bit about the itinerary of the Prime Minister and the projects that are being inaugurated. All right, Aneri, if you could hear me, please speak to us a little bit more about the developmental push that we are seeing by the Prime Minister there in Secunderabad right now, and the various other projects, because we're being told that at least the developmental projects worth rupees 11,300 crores that are being inaugurated and dedicated to the nation, foundation stones being laid for various projects as well. If you could speak to us a little bit in detail about these projects and what exactly are these projects, plus the itinerary of the Prime Minister as to the events where he will be giving his attendance today. As we have been seeing, Priyanka, these series of events which Prime Minister Narendra Modi will be here in Hyderabad till around 1:30 p.m. as Prime Minister Narendra Modi has now already flagged off the Vande Bharat train at the Secunderabad railway station. Well, this is the second Vande Bharat train which is being thrown open for the people. This train will be from Secunderabad to Tirupati, and now we also have been seeing that various projects, various development work, especially the rebuilding of Secunderabad railway station, aims also being allotted for Telangana. So definitely mega projects being inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, and also all of this is worth rupees 11,300 crores. And also at the same time, we have been seeing how there has been a massive face-off between the BJP and the BRS, because this visit of Prime Minister Narendra Modi comes just few months of the state elections, because remember, Priyanka, Telangana State Assembly elections will be happening this year, and that is why we have been seeing how the BRS government also has been hitting out at Prime Minister Narendra Modi as they continue to state that now all of these projects are being inaugurated and all of this is being done as there are elections in the state. However, we see that the BJP has also been saying that this is a development work which Prime Minister Narendra Modi wants to build a better state, and that is the reason why various development projects are being inaugurated by Prime Minister. But however, when we talk about the politics which is growing in the state of Telangana, when we talk about this particular program where Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has not attended, where he did not even welcome Prime Minister Narendra Modi at the airport, he did not even attend the Vande Bharat train launch by Prime Minister, and now we are seeing
that this is not the first time where PM KCR did not attend, and now Prime Minister Narendra Modi has arrived at parade ground. That's right, Aneri. Thank you for getting us the details of the Prime Minister's movement and the inauguration of the several developmental projects that the Prime Minister is there to do. And of course, a very important visit of the Prime Minister, as we are seeing the Prime Minister Narendra Modi visiting the 4 South Indian states in 2 days. And of course, this also comes less than 6 months before the assembly elections, less than in fact weeks before the assembly elections of Karnataka, and how there have been a bitter battle between the centre appointed governors and the ruling parties in several states as well. So a very significant visit of the Prime Minister there in South, where 4 southern states of the country will be covered by the Prime Minister, and various developmental projects will also be inaugurated. Time now for some news in brief. President Draupadi Murmu performed a sortie on the Sukhoi 30 MKI fighter aircraft from Tezpur Air Force Station today. Earlier, the President Draupadi Murmu was accorded with the Guard of Honour on her arrival at the Tezpur Air Force Station. President to take a sortie in the Sukhoi 30 MKI fighter aircraft today from Assam's Tezpur. Assam police arrested 3 leaders and banned organisation Popular Front of India and Campus Front of India in Assam's Barpeta district. Police has also recovered cash of rupees 1.5 lakh, 4 mobile phones and a pamphlet of the Social Democratic Party of India in their possession. According to the Assam police officials, the arrested PFI and CFI leaders were identified as Zakir Hussain, Abu Sama and Shahidul Islam as well. Telangana Chief Minister KCR has skipped Prime Minister Narendra Modi's event in Hyderabad today despite being invited. Notably, the Prime Minister Narendra Modi has flagged off the Vande Bharat Express between Secunderabad and Tirupati today, and he's also inaugurating and laying the foundation stone for the projects worth rupees 11,300 crores. Ahead of the Prime Minister's visit in Telangana today, several Telangana Congress leaders were detained by the police, including Youth Congress President Shiv Sena Reddy, NSUI President Balamuri Venkat, Dalit Congress President Preetham, and Women Congress President Sunita Rao. This comes as the Youth Congress has called for a protest during the visit of the Prime Minister. A Delhi police head constable shot himself dead early morning today. The Delhi police has said that HC Imran Mohammed has shot himself with his official weapon. They further said that Mohammed was immediately shifted to Bara Hindu Rao Hospital, where he was declared brought as dead. The incident took place around 6 a.m. on Bela Road, and notably the district crime team has been called to inspect the incident. A major fire erupted at the PVC market in Delhi's Tikri Kalan today. Nearly 25 fire tenders were immediately rushed to the spot to douse the fire. As per the official statement, the fire was brought under control and the cooling operation was conducted. In another episode of unruly behavior on board, a 40-year-old drunk passenger on the Delhi-Bengaluru Indigo flight has been arrested for trying to open the emergency door flap. According to the Indigo officials, the unruly passenger has been handed over to the CISF upon arrival in Bengaluru. Former IT Minister Kapil Sibal attacked the centre over the fact-check provisions of the IT amendment rules, saying now that the government will decide what is fake, as Union Home Minister Amit Shah says democracy is not in danger. A poster war had erupted between the Tamil Nadu government and the governor R.N. Ravi. According to sources, anti-governor posters with the hashtag Get Out Ravi and Dictator Ravi were seen at the various places in Chennai today. This comes after the governor had been accused of stalling the passage of bills.
Bharatiya Janata Party West Bengal President Sukanta Majumdar, in a scathing attack, alleged that the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress is doing everything to insult the tribal community. And according to the BJP leader, some of the scheduled tribe community women who joined the BJP were allegedly forced by the TMC to rejoin the ruling party and perform a Dandavat Parikrama as a punishment. A US federal judge has halted the FDA approval of abortion pill, causing a row of political reactions across the country. This comes as the US continues to witness massive protests across the states over the abortion rights of women in the country. Agency report, Republic TV. Time now here for a short break, viewers. Coming up on the other side, Sharad Pawar strikes a discordant note once again, says JPC on Adani issue won't be effective. 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. आपने 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा, जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है। नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास। मैनेजर्स, कोचेस जो थे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भी हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है। मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते। नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं। फिर हमने खुद वहाँ, मेरा टीम ने स्टेज पे, क्रिस्टन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया। The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of nation first. Dragging back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are with several cases of corruption and disproportionate assets. This will ensure that at a వెంకటేశ్వర స్వామి సేవలో ఈ రోజు వందే భారత్ ట్రైన్ ను నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించారని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను. ఇది 13వ ట్రైను, అంటే 14వ ట్రైన్ ఈ రోజు ప్రారంభించుకున్నాము. ఈ 14 ట్రైన్లలో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ లలో 2 ఎక్స్ప్రెస్ లు తెలంగాణ ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ గారు బహుమతిగా ఇచ్చారని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాదు ఈరోజు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ తెలంగాణలోని అతిపెద్ద రైల్వే స్టేషన్ 714 కోట్ల రూపాయలతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుకూలంగా ఈరోజు ఆ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ కూడా భూమి పూజ కొద్దిసేపటి తర్వాత ప్రధానమంత్రి చేయనున్నారు. అదేవిధంగా వచ్చేటువంటి 40 సంవత్సరాల వరకు ఎంతైతే ప్రయాణికులు పెరుగుతారో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ ను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ గా ఈరోజు సికింద్రాబాద్ ప్రజలకు, హైదరాబాద్ ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు, హైదరాబాద్ లో ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేసేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి అద్భుతమైనటువంటి ఒక రైల్వే స్టేషన్ ను ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు అందించారని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు 3,25,000 మంది ప్రయాణం చేసే విధంగా ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ అధికరించారు. అదే కాకుండా ఈరోజు హైదరాబాద్ నుంచి
మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకు ఎవరైతే ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తారో వాళ్ళకి ఇప్పటికీ సింగిల్ లైన్ మాత్రమే ఉంది, రైల్వే లైన్. దాన్ని డబ్లింగ్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా గౌరవనీయులు ప్రధానమంత్రి గారు ఈరోజు 1410 కోట్ల రూపాయలతో ఏదైతే రైల్వే లైన్ డబ్లింగ్ చేయడం జరిగిందో దాన్ని కూడా ఈరోజు మన తెలంగాణ ప్రజలకు అంకితం చేస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ మీకందరికీ తెలుసు, అనేక రోజులుగా ఆ ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆగిపోయి ఉన్నది. ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందాలో అది అందని కారణంగా ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ పెరిగింది, దాని యొక్క బడ్జెట్ కూడా పెరిగింది. ఇటీవల ప్రధానమంత్రి గారిని ఈరోజు మా ఎంపీలందరం కలిసి, తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఎంపీలందరం కలిసి, బీజేపీ సంబంధించినటువంటి సంజయ్ గారు కానీ, బాబురావు గారు కానీ, లేక ధర్మపురి అరవింద్ గారు కానీ మేమందరం పోయి అడిగాము, సార్ హైదరాబాద్ కామన్ మ్యాన్ ట్రైను ఈ యొక్క ఎంఎంటీఎస్ ఉద్యోగస్తులు, కార్మికులు, వర్కింగ్ కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా ప్రయాణం చేసి చాలా తక్కువ ధరతో ప్రయాణం చేయగలటువంటి ట్రైను, ఆ ట్రైనును మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం లేకున్నా కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పాము. అందుకోసం ఈరోజు 13 కొత్త ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులను ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్ when we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. Mediation will work when there is uncertainty of winning by any one party. इसलिए जो judgment आया यही सबसे उत्तम है. This puts an end to the whole issue. Assertive 1% that wants to open the wounds again. They do not operate only by the verdict of the court. Mr. Ohana, you as a Speaker of Knesset, how do you see upholding the democracy? And I'm talking at a time when there have been protests, and in fact the issues between the two countries are sort of on the same level. We want Israel to be a better democracy, which means more decisions should be taken by the public through their representatives. And unfortunately, we have an unbalanced situation, and we are trying to balance it. As you mentioned, it is a matter of dispute, and we have protests as we have in democracies. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही है, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है. ये पहला एक When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. आपने 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा. जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है. नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास. मैनेजर्स, कोचेस जो थे उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भाई हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है. मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते. नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं. फिर हमने खुद वहाँ, मेरा टीम ने स्टेज पे क्रिस्टन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया.
इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। Sharad Pawar strikes a discordant note once again, says JPC on Adani issue won't be effective. From Savarkar to Adani issue, Pawar blunts opposition card, a big strike on opposition unity attempt. Mega development push in the south, Prime Minister Modi to launch development projects in Telangana and Tamil Nadu. मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती कि उतर के तो इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोलूंगा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता है, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। BJP leader Kailash Vijayvargiya makes sexist comments, says girls wearing short dresses are shupnakhas. The all-important BJP meeting on Karnataka underway at Nadda residence party to decide candidates. President Draupadi Murmu takes off from Tezpur IAF station in her maiden Sukhoi Su. And we start with a big focus story. While the opposition attempted to stall the parliament proceedings with a JPC demand on the Adani matter, Sharad Pawar of the NCP has now struck a discordant note with the opposition, where he says that a Supreme Court panel will be effective than the JPC demand. He's also dismissed the Hindenburg report, which has created quite a political furor across party lines. In fact, to take you through the exact statement of what Sharad Pawar has said, he says that the BJP will have more seats in the JPC and that the opposition will have few seats in the JPC if it's formed, and that SC decision on panel is way better. So NCP chief there striking a discordant note with the opposition. Let's listen in to those exact statements that were made by the NCP chief. JPC म्हणजे काय? जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी. पार्लमेंटमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा दोन सभागृह आहेत आणि या दोन्ही सभागृहातल्या सदस्यांची ही समिती साधारणतः JPCचं फॉर्मेशन कसं होतं, या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे त्यांना अधिक जागा मिळतात. आता उदाहरणार्थ 21 लोकांची JPC असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील. तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे, त्या संवेदनेची शंका व्यक्त करायला संधी आहे. याऐवजी सुप्रीम कोर्टाने एक कमिटी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याच्यामध्ये निवृत्त सुप्रीम कोर्टाचे जजेस आणि इतर काही लोक आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आणखीन एक गोष्ट केली की किती दिवसात त्यांनी अहवाल द्यायचा, टाईम पिरियड, याही संबंधीची सूचना केली. आणि माझं मत असं आहे की मी काही JPC सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वी JPC होती, काही JPCचा मी स्वतः चेअरमन होतो, पण
जेपीसी बहुमताच्या संख्येवर त्या ठिकाणी तिचं फॉर्मेशन होणार असल्यानं जेपीसीपेक्षा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल असं माझं मत आहे. पॉईंट असा मला हिंदे कोण हे माहिती नाही. त्यांचा डिफॉल्ट वर्तमानपत्रात मी वाचला. एक कंपनी परदेशातली ती या देशातल्या परिस्थितीच्या संबंधीची काही भूमिका घेतली. त्याच्यावर किती आपण लक्ष केंद्रित करायचं याचा विचार केला पाहिजे. त्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी ही अधिक प्रभावी ठरेल असं मला वाटतं. कुठलीतरी बाहेरची एखादी संघटना ती आम्हाला सांगणार यापेक्षा या देशातल्या सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला सांगितलं तर ते लोकांच्या अधिक विश्वासाला पात्र ठरेल. एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे. आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं. और दूसरा देशवासियों को ये पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है. इसलिए आजकल अदानी अंबानी नाम लेते हैं तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है. दूसरी बात आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या. ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है. इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा. हम देंगे और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है. All right, so there you heard Sharad Pawar making that big statement saying that there shouldn't be a JPC, rather it should be an SC monitored probe into the Hindenburg matter. So big statement that has come in while the opposition attempted to stall the parliament proceedings with JPC demand on Adani issue. Sharad Pawar has now struck a discordant note with the opposition leaders where he says that SC panel will be more effective than JPC and also dismissing the Hindenburg report. Remember, this is not the first time that the NCP leader has struck a discordant note with the opposition because way back in fact, in the month of April itself, Sharad Pawar on Savarkar had said that cannot ignore Savarkar's sacrifice in freedom struggle, and also on the Degree Rao had said that the PM got votes for his charisma, not degree. So a lot of such statements that have come in from Sharad Pawar where he's not really in sync with the opposition's stand on these issues. Once again, listening to those remarks that have come in from the NCP chief. जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी पार्लमेंटमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा दोन सभागृह आहेत आणि या दोन्ही सभागृहातल्या सदस्यांची ही समिती साधारणतः JPCचं फॉर्मेशन कसं होतं, या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे त्यांना अधिक जागा मिळतात. आता उदाहरणार्थ 21 लोकांची JPC असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील. तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ ज्याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे त्या संबंधीची शंका व्यक्त करायला संधी आहे. याऐवजी सुप्रीम कोर्टाने एक कमिटी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला ज्याच्यामध्ये
निवृत्त सुप्रीम कोर्टचे जजेस आणि इतर काही लोक आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आणखीन एक गोष्ट केली की किती दिवसात त्यांनी अहवाल द्यायचा, टाईम पिरियड, याही संबंधीची सूचना केली. आणि माझं मत असं आहे की मी काही JPC सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वी JPC होती, काही JPCचा मी स्वतः चेअरमन होतो. पण JPC बहुमताच्या संख्येवर त्या ठिकाणी तिचं फॉर्मेशन होणार असल्यानं JPCपेक्षा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी अधिक उपयुक्त आणि प्रभावित आहे असं माझं मत आहे. All right, so there you heard Sharad Pawar striking a discordant note, of course, with the opposition leaders, with the statements that have come in from the NCP leader, who says that there shouldn't be a JPC probe into the Adani matter, rather an SC-monitored probe, a statement that has drawn sharp reaction from the Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde as well, who says that the opposition leaders must pay heed to Sharad Pawar's statements. अनेक वर्ष त्यांना त्या राज्यामध्ये त्यांनी काम राज्यामध्ये केलेलं आहे, केंद्रामध्ये त्यांनी काम केलं आहे आणि त्यांनी ते भाष्य केलं आहे. त्यामुळे जे ज्यांना विरोध करत आहेत त्यांना तुम्ही हा प्रश्न विचारला पाहिजे. देखिए मैं तो इस विषय में अंदर में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके मामला देख रहे हैं. लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए, वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है. हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का. मला वाटत नाही की पवार साहेबांनी क्लीन चिट दिली. पवार साहेबांनी क्लीन चिट दिली नसून चौकशीचे जे पर्याय आहेत त्या संदर्भात त्यांचं मत व्यक्त केलेलं आहे. आम्ही सगळे JPCचा आग्रह धरतो आहे आणि पवार साहेबांचं असं म्हणणं आहे की JPCमध्ये चेअरमन त्यांचा असतो, JPCमध्ये सदस्यांचं बहुमत त्यांचं असतं, त्यातून काय निष्पन्न होणार. एका विशिष्ट कालमर्यादेत न्यायालयीन चौकशी हा पर्याय त्यांनी सुचवला. मग तुम्हाला JPC हवी आहे का सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांकडून चौकशी हवी? आता देशाच्या गुन्हेगारांना ज्या पर्याय मार्गातून शिक्षा मिळेल असे कोणते पर्याय चालू शकतात, पण JPCवरती विरोधी पक्षांची जी मागणी आहे ती ठाम आहे. All right, so there you heard Eknath Shinde saying that the opposition must pay heed to these statements that have come in from NCP leader Sharad Pawar, the NCP chief, who says that instead of a JPC demand, there should be a demand for SC-monitored probe into the Hindenburg matter. In fact, listen into a reaction that's also come in from Ashok Chavan. I think this is an individual personal opinion of Shri Sharad Pawar ji, who is a senior leader in the opposition. I think the united opposition altogether had decided that there should be a JPC form to go into the issues relating to the Adani issue. And that is why when this was unitedly decided, in which the NCP was also a part of it, I think the entire opposition should abide by it. But in spite of that, he still feels his opinion, as he has said, that this is his individual opinion. So, well, people may have opinions, but when the opposition together takes a call, I think that should be followed by each and every constituent of the opposition. देखो, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है. आपको याद होगा कि जब भी कोल स्कैम हुआ था, ऐसा जब आरोप हुआ था, तब भी कोर्ट की कमेटी बिठाई गई थी. तब भी अपोजिशन के कहने के आधार पर उस समय भी JPC की गई थी. तो पवार साहब का व्यक्तिगत वो मत हो सकता है, लेकिन मोदी जी अदानी के मैटर में क्यों डर रहे हैं, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है. शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है. हम जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस ने ये भूमिका रखी. हमारे साथ कई दल हैं जिन्हें अदानी के बारे में सवाल पूछे हैं. तो इसलिए
मैं ये नहीं कहता कि शरद पवार जी ने ये क्यों कहा है, हमें हमारा इशू नहीं है, वो शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो। So big statement, of course, that's coming from the NCP chief Sharad Pawar, who says that there shouldn't be a JPC probe into the Adani matter. Rather, it should be a SC monitored probe into the Hindenburg report. And to news that's just coming in from the national capital, where a massive fire broke out at a plastic godown in Delhi's Tikri Kalan area. In fact, we're given to understand that no casualties have been reported and that the fire has now been doused. In the wee hours today, a fire broke out at a plastic godown in Delhi's Tikri Kalan area. At least 25 fire tenders were deployed at the spot to douse the raging flames. A white cloud of smoke engulfed the area. Watch how the plumes of smoke from the fire engulfed the godown. The number of casualties remain yet to be ascertained. 10 मिनट पे कॉल मिली थी, पीवीसी मार्केट में आ गया, तो अकॉर्डिंगली गाड़ियां भेजी गई, लेकिन यहाँ तेज हवा के चलते आग जल्दी फैल रही थी। मौके की ग्रेविटी को देखते हुए इस आग को मीडियम कैटेगरी का घोषित किया गया है। टोटल 26 गाड़ियां यहाँ फायर पे काम कर रही हैं। ऐसा सच अभी कोई जान माल की अभी कोई सूचना नहीं है, फिर भी इसको जब जाने से पहले हम लोग पूरा चेक करेंगे। आसपास पब्लिक से पता किया है, किसी के अंदर हताहत होने का कोई चांस नहीं है। Meanwhile, the cause of the fire is yet to be ascertained. Bureau Report, Republic TV. Slipping away, short break coming up on the other side. BJP leader Kailash Vijayvargiya makes sexist comments, says girls wearing short dresses are shupnakhas. The all-important BJP meet on Karnataka underway at Nadda residence, party to decide candidates. The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of nation first. Dragging back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are with several cases of corruption and disproportionate assets. This will ensure that at a local level, no officer can go about saying, hey, I've come to inspect you, without the system approving it. सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक। When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism.
And to news that's just coming in, it's yet another jolt for the Congress party as per sources. C.R. Keswan, the former Congress leader, who's also C. Rajagopalachari's great-grandson, who recently resigned from the Congress, is all set to join the BJP as per sources. So a source-based information that's just coming in, that C.R. Keswan, who recently joined, recently quit the Congress, is all set to join the BJP this afternoon. So those are the details that are just trickling in. Remember, C.R. Keswan is also the great-grandson of C. Rajagopalachari. He had very recently resigned from the Grand Old Party, saying that the party is not really looking into the national issues, and there are several issues. There were in fact several of those issues that were raised by C.R. Keswan, after which we are now given to understand that he's all set to join the BJP. So it's yet another setback for भारत माता की। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, इसी तेलंगाना की धरती के पुत्र और मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियमैना సోదరా సోదరి మణులారా, మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వक నమస్కారములు. महान क्रांतिकारियों की धरती तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम. आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला. थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है. ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी. यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है. इसके साथ ही आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं. मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं. तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने
यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है। मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम MMTS प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है। आज भी यहां 13 MMTS सर्विस शुरू हुई है। MMTS का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा। साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और 2 देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत, 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन, वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है।
सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अकलकोट करनूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूब नगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवाकुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो। केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई है। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती दोनों के विकास पर बल दे रही है। टेक्सटाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मजदूर को भी दोनों को बल देता है। हमारी सरकार ने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना तय किया है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार के साथ साथ तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है।
मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाएं। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था विकसित की है। आज किसानों को, विद्यार्थियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके 3 मतलब सकते थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं, वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर
बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भाई और बहनों, जब सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, यही तो संविधान की सच्ची भावना है। जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम आया, ये पूरा देश देख रहा है। बीते 9 वर्षों में देश की 11 करोड़ माताओं, बहनों, बेटियों को इज्जतघर टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी 30 लाख से अधिक परिवारों की माताएं, बहनों को भी ये व्यवस्था मिली है। बीते 9 वर्षों में देश में 9 करोड़ से अधिक बहनों, बेटियों को उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। तेलंगाना के 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। साथियों, परिवार तंत्र तेलंगाना सहित देश के करोड़ों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था। हमारी सरकार में आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तेलंगाना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तेलंगाना के लाखों गरीब साथियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। तेलंगाना के 1 करोड़ परिवारों का पहली बार जनधन बैंक खाता खुला है। तेलंगाना के 2.5 लाख छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी का मुद्रा ऋण मिला है। यहां 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक छोटे किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए भी मिले। ये वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार वरीयता मिली है, प्राथमिकता मिली है। साथियों, जब देश तुष्टीकरण से निकलकर सबके संतुष्टीकरण की तरफ बढ़ता है, तब सच्चा सामाजिक न्याय जन्म लेता है। आज तेलंगाना सहित पूरा देश संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलना चाहता है, सबका प्रयास से विकसित होना चाहता है। आज भी तेलंगाना को जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो संतुष्टीकरण की भावना से प्रेरित है, सबका विकास के लिए समर्पित है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए तेलंगाना का तेज विकास बहुत जरूरी है। आने वाले 25 साल तेलंगाना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के लोगों को तुष्टीकरण तथा भ्रष्टाचार में डूबी हर ताकतों से, ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगाना के भाग्य को निर्धारित करेगा। हमें एकजुट होकर तेलंगाना के विकास के सारे सपनों को पूरा करना है। इन सारे प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत संतोष की बात है, इतनी बड़ी तादाद में तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so there you heard Prime Minister's address in Telangana, in Hyderabad. He says, and I quote, "Today's new India, the new India of the 21st century, is rapidly building modern infrastructure in every corner of the country. The central government is also rapidly developing the highway networks in Telangana, also taking on dynasty politics and Parivarwad in the country." So Prime Minister taking a whale dig at the opposition and also talking about the infrastructure projects which are being taken up by the central government in the state of Telangana. Let's quickly take a word from Aneri also joining us. Aneri, if you can quickly take us through the key highlights of Prime Minister's address there, and two, what can we next expect as far as Prime Minister's visit to Telangana is concerned? Well, Samika, we have been seeing that our Prime Minister Narendra Modi was in Hyderabad today and he flagged off the Vande Bharat train from Secunderabad to Tirupati, and also at the same time, after that, he addressed the public gathering here where he also launched various development projects worth rupees 11,300 crores. And also, while speaking, while addressing the gathering, Prime Minister Narendra Modi hit it out at the dynasty politics, at the corrupt rule here in the state of Telangana, and also at the same time he further went on to state
that we have to fight against corruption, and he will continue to fight against corruption by giving various. He also slammed the opposition party over the cases which are being booked against the opposition leaders or various other leaders in connection with any other scams where opposition leaders had moved. And afterwards, we also saw how the Supreme Court orders had come up. Well, Prime Minister Narendra Modi also hinted at the opposition parties and especially hitting out on a comment here. Well, he says that we are against the dynasty politics, the family rule, and also the corrupt. And also, we believe in removing corruption from the egg, and that is the reason why a strong message being given out by Prime Minister Narendra Modi. Niksha, this is. Alright, we seem to have lost that connection with Aniri, but Prime Minister there in a veiled attack at the opposition says a few days back some political parties had gone to the court to seek protection so that no one opens their corruption books, but the court turned them back. So Prime Minister there making a very scathing remark there while he delivered that address in Hyderabad of Telangana. And with that, we slip into a very short break. Coming up on the other side, all that's making news from across the country. $13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. Mr. Ohana, you as a Speaker of Knesset, how do you see upholding the democracy? And I'm talking at a time when there have been protests, and in fact the issues between the two countries are sort of on the same level. We want Israel to be a better democracy, which means more decisions should be taken by the public through their representatives. And unfortunately, we have an unbalanced situation, and we are trying to balance it. As you mentioned, it is a matter of dispute, and we have protests as we have in democracies. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है। ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे, तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज। आपने 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा, जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है। नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास। मैनेजर्स, कोचेस जो थे उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भी हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है। मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते। नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं। फिर हमने खुद वहाँ मेरा टीम ने स्टेज पे क्रिस्टन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया। आपने 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा, जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है। नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास। मैनेजर्स, कोचेस जो थे उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भी हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है। मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते। नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं। फिर हमने खुद वहाँ मेरा टीम ने स्टेज पे क्रिस्टन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया। who are conducting massive protests in Chennai against the Prime Minister Narendra Modi coming to Chennai today ahead of various events that are going to happen in Chennai. You can see the posters saying "Go Back Modi" everywhere, and you can see how the people, the Congress cadres, have gathered here raising black flags, and "Go Back Modi" is written everywhere. Right now, you're looking at a man who's painted himself with "Go Back Modi," and this is one of the prime locations in Chennai, and they have started from the morning to protest against the arrival of Prime Minister Narendra Modi ji, and they are conducting this protest condemning the disqualification of Rahul Gandhi from the parliament, and that is exactly why they are doing this. But today's events are going to be very important. And
And coming up on the other side, we'll get you more as from Savarkar to Adani matter, Pawar blunts opposition card, a big strike on opposition unity attempt. And BJP leader Kailash Vijayvargiya makes sexist comments, says girls wearing short dresses are shukna khas. आप सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. Mediation will work when there is uncertainty of winning by any one party. इसलिए जो judgment आया यही सबसे उत्तम है। देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है। ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे, तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज। कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। Sharad Pawar strikes a discordant note once again, says JPC on Adani issue won't be effective. From Savarkar to Adani issue, Pawar blunts opposition card, a big strike in opposition unity attempt. In Hyderabad, Prime Minister takes on KCR government in an unrelenting attack again, says corruption and dynasty politics go hand in hand. मैं रात में जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती को झूठ नहीं बोलूँगा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं, उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। BJP leader Kailash Vijayvargiya makes misogynist remarks, says girls wearing short dresses are shukna khas. The all-important BJP meeting on Karnataka underway at Nadda residence, party to decide candidates. President Draupadi Murmu takes off from Tezpur IF station for a maiden Sukhoi sortie.
The Prime Minister is in Hyderabad and has again hit out at the KCR government in an unrelenting attack. In fact, Prime Minister in those remarks that he made also hit out at several opposition parties, saying that dynasty politics continues by several opposition parties. In fact, just to quote what Prime Minister has said, he says, and I quote, a few days back, some political parties had gone to the court to seek protection so that no one opens their corruption books. But the court turned them back. Prime Minister Modi made these remarks while he was addressing that rally in Telangana. And remember, this comes after after several opposition parties had moved the top court seeking, in fact, had moved the top court against the central agencies, while the Supreme Court had said that the politicians cannot be placed on a pedestal higher than citizens and cannot seek special treatment under law and immunity from arrest. So those were the remarks that were made, the observations by the court, while it dismissed the plea moved by the opposition leaders, and Prime Minister there hitting out at the opposition, saying that, he says, and I quote again, a few days back, some political parties had gone to the court to seek protection so that no one opens their corruption books, but the court turned them back. So those were the remarks where the Prime Minister has hit out at the opposition on Parivarwad, on dynasty politics, and even at overall opposition leaders after they moved the top court against the central agencies. Once again, listen in to those remarks that were made by the Prime Minister while he addressed that rally in Hyderabad. हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में And getting in the feed right now of C.R. Keswan, the great grandson of India's first Indian Governor General C. Rajagopalachari, an ex-Congress spokesperson who is all set to join the BJP. So in a few minutes from now, C.R. Keswan would be formally joining the BJP. Remember, this comes, of course, after he resigned from the Grand Old Party a few days back. Well, those are the live visuals also coming in, the media briefing that is expected to begin anytime now, as he's now been inducted into the BJP days after he resigned from the Congress party. So it's once again Republic Newsbreak that's been confirmed as C.R. Keswan, the former Congress leader, has now officially joined the BJP today. Remember, this comes just after a few days after he resigned from the Grand Old Party. शराब बंद हो तो बोले चुनाव। शुभ दिन है, और शुभ इसलिए कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी केशवन जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको, जैसा कि अनिल बलूनी जी ने बताया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में बोलना बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, और सब हम इतिहास जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि उनका कद कितना बड़ा था, उनकी विद्वत्ता कितनी बड़ी थी. He was an intellectual and he was one of the tallest leaders during the freedom movement. However,
after independence, we all know how he was sidelined. उनको अलग कर दिया गया और एक तरीके से अगर आप इतिहास को देखें, उनको गुम कर दिया गया. बहुत कम उनका नाम लिया जाने लगा. And it was one family which tried to say that they did everything, but Rajgopalachari ji was nothing in it. तो आज बहुत मुझे खुशी है कि केशवन जी जो कांग्रेस में भी रहे, काफी समय विदेश में रहे और आज हमारे बीच में, वो इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है भारत को गौरवशाली बनाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ होना उनके लिए महत्वपूर्ण है. और ये उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मुझे लगा कि जितने समय वो बाहर रहे, उन्होंने देखा है कि बाहर क्या बदलाव आया है भारत के बारे में. People look at India today differently than what we were looking at it. And I would say that in the last 9 years, there has been a sea change in how people abroad view India and India's achievements. Unfortunately, out here in the din of many other things, that gets lost, but people who are outside, they're able to see that very clearly, despite all that is happening to drown those good things. Keshwanji has been an ardent follower of how things are moving in India. He understands what is the politics of development and what is the politics of ensuring that each and every section of society prospers in the country. And that is how he decided to join Bharatiya Janata Party. I sincerely welcome him, and I'm sure that with him we will have a very strong voice, not only in Bharatiya Janata Party, but also in the politics of Tamil Nadu. Dhanyavad, Jai Hind. धन्यवाद. मेरा सीआर केशवन जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें. जनरल वीके सिंह जी, अनिल बलूनी जी, संजय जी, प्रेम शुक्ला जी और यहाँ उपस्थित आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम. आज मुझे बीजेपी में दिल से स्वागत करने के लिए मैं जनरल वीके सिंह जी और इन सब दिग्गजों को अत्यंत आभार व्यक्त करना चाहता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा. और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन सब के उपस्थिति यहाँ पूज्य राजा जी सी राजगोपालाचारी के प्रति इनके गहरा आदर को दर्शाता है. I want to thank the elders for inducting me here into the world's largest political party, the Bharatiya Janata Party, especially on a day when our Prime Minister is in Tamil Nadu. Their presence here reflects the deep respect the Bharatiya Janata Party has for the founding fathers and mothers of our great nation, including C. Rajagopalachari. I told you I'm coming from Tamil Nadu. It's the land of the great Thiruvalluvar, the great poet. And there is a couplet of Thiruvalluvar, I think it's number 621. It says, Idukkan varungal nagaga, adanai adutturvadu agtoppadil. It's a little difficult to pronounce. Idukkan varungal nagaga, 621. It broadly means when you're confronted with a crisis, you should face it with a smile. And that is the best way to vanquish the crisis. The quintessential example of this Thiruvalluvar quotation is our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. When we, not just India, the whole world was faced with the crisis of Corona, Narendra Modi ji calmly, with a smile, sternly took on this challenge with the help of selfless COVID warriors, health workers, ensured that the darkness and uncertainty enveloping us was prevailed upon and we were all safe. Narendra Modi ji
trusted the Indian medicines, the Indian vaccinations. 225 crore vaccinations were given. 97% of Indians were given the first dose, and about 90 of us have been fully vaccinated. So first I want to thank the Honorable Prime Minister and the selfless health officials who actually saved us. Narendra Modi's people-centric policies, their responsive, corruption-free governance, very importantly, and reform-based, inclusive growth agenda has transformed India from a very fragile economy into the 5th largest economy in the world. Now we've surpassed Britain. His vision of Antyodaya has empowered even the last person in the last mile. PM Kisan Samman Nidhi, the government has transferred about 2.25 lakh crores to 11.4 small farmers. When you take the Swachh Bharat Abhiyan, 11.3 crore toilets have been built, giving dignity to people. Jal Jeevan Yojana, Har Ghar Jal, about tap water has been given for 11 crore people. 81 crore people were given free ration during the COVID time. It still continues. About medical treatment for about 5 lakh rupees for 50 crore people has been assured. I know people in my house from Vanchit were got Pakka Ghar through PM Awas Yojana. 3 crore houses have been built. And PM Ujjwala Yojana, about 9.5 lakh connections have been given, and Ujjwala 2 migrants have been taken care of. I just want to say that this has been tectonic transformation in the domestic scene. And not just that, I come from a computer background. The digital transformation is, incomparable. We have about 48 crore Jan-Dhan accounts. And in the 48 crore Jan-Dhan accounts, 55% are women. And I remember Amit Shah ji once said, earlier DBT was dealer-broker transfer. Now it has become direct benefit transfer, where 28 lakh crore rupees under various government schemes have been directly given to the people. And more importantly, 2.3 lakh crore has been stopped before it was being pillaged by middlemen. That has been stopped. Not just, as I said, the tectonic transformation in the domestic policy, but what personally touches me is the way the Bharatiya Janata Party and our Honorable Prime Minister have cherished and celebrated our heritage and history. If you see Kashi Sangamam, Tamil Sangamam, that is again in Tamil Nadu. What more can you see in terms of national integration and pluralism? We were all so touched. And then if you take Azad Ka Amrit Mahotsav, I am not a Parivarvadi or a Vanshwadi. My father was an engineer, my grandfather was a news editor, my great-grandfather was in politics, but I joined as a new person. Hardly people remember the sacrifices of people. You may know me because I'm Rajaji's grandson, but there are so many unsung heroes and heroines we don't know. Azad Ka Amrit Mahotsav has ensured that unsung mileposts, unsung icons, unsung events have been given their due, which is very, very honorable. That is something which has to be commended. And our Honorable Prime Minister on the world stage, if you see, I don't need to say that the way he's put national security, Sir is here, he knows, the way national security has been given primacy in the steadfast leadership has ensured we've been in the forefront in the community of world nations, and the true reflection of that is that the presidency of the G20 summit is happening for the first time in India, and we are heading it. I don't want to take much time. Looking forward to the future, there is a beautiful quote from the Mahabharata. It says, Janani Janma Bhumishya Swargadapi Gariyasi. I think that is the motto of the Bharatiya Janata Party and our Honorable Prime Minister. The motherland and the mother and the motherland are greater than heaven. So motherland comes first, and he has very clearly laid his vision that in 2047, in 100 years of independence, we should be a Vishwaguru. And I'd like to say this, sir, in your presence. When Ram Setu was being built, Gilhari played a small role. Now that I've come into the Bharatiya Janata Party, when the bridge of peace, when the bridge of prosperity, when the bridge of progress is being built for the 2047 to become a Vishwaguru, I'm very glad that I'm in the BJP to play my own small role in nation building. Thank you. தமிழ்நாடு में चाहिए திருக்குறள் இன்று தமிழகத்திலே நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பல திட்டங்களை நிறுவிக் கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரும் நான் இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்திருப்பதை ஒரு பெரிய பேராக கருதுகிறேன். அவரது தலைமையிலே
நாம் ஒரு வல்லரசு ஆவது நிச்சயம். நான் பல திட்டங்களை பற்றி கூறியிருக்கிறேன். ஏழைகளுக்காக, கஷ்டப்படும் மக்களுக்காக பல நல்ல திட்டங்களை பிரதம மந்திரி அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள். வருகின்ற காலத்திலே அவர் தலைமையிலே இந்தியா ஒரு வல்லரசு ஆகும் என்பதில் இம்மி கூட ஐயமில்லை. இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே ஜெனரல் வி.கே. சிங்ஜி அவர்கள் முன்னிலையில் சேர்ந்ததை ஒரு மிகப்பெரிய பேராக கருதுகிறேன். நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவர் வளர்ச்சி பாதையிலே நாட்டை வழிநடத்தும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருந்து என்னாலும் ஒரு சிறிய பங்கை ஆற்ற முடியும் என்பதை நான் ஒரு பெரிய பெருமையாக கருதுகிறேன். நன்றி. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Alright, so it's a big boost for the BJP as C.R. Keswan, who had resigned from Congress very recently, has now officially joined the BJP, saying that BJP has done a lot when it comes to looking into, in fact, ensuring that the national interest is kept in mind, and he's of course Rajagopalachari's great grandson, who's now joined the BJP. And we slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get you more reactions from the opposition and the BJP as it's yet another jolt for the Congress. आपने 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा, जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है. नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास. मैनेजर्स, कोचेस जो थे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है. मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते. नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं. फिर हमने खुद वहाँ, मेरा टीम ने स्टेज पे, क्रिस्टन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया. The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of nation first. Dragging back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are with several cases of corruption and disproportionate assets. This will ensure that at a local level, no officer can go about saying, hey, I've come to inspect you, without the system approving it. Sent out. How do you see this such comment against the judiciary? It is very, very sad because not to get into individual details, but I think this is against the very essence and the grain of democracy. And I hope suitable legal, it's not about from which party he said it, but I think the fact that somebody is casting aspersions and attacking the judiciary in this way, it's very unfortunate. I hope the right legal action is taken against this person. Thank you. This was C.R. Kesavan, and he says that serious action should be taken against those who are making comments against judiciary. And the back-to-back resignation is one of the main reasons behind such resignations is because the BJP reflects the idea, according to them, of a developing India. This is Madhurima Mishra with Vijay Vivek for Republic TV.
All right, so Madhurima, they're speaking exclusively to CR Keswan, who's just joined the BJP. So another feather in the cap of the BJP, while it's a jolt for the Congress, as CR Keswan, remember, had resigned from the Grand Old Party just very recently. In fact, in 3 days' time, we've seen 3 big setbacks come in for the Grand Old Party. And now, after Anil Antony and after Kiran Reddy, it's CR Keswan who had tendered his resignation and has now joined the BJP. We slip into a short break, but we'll get you more on the other side of this very short break. When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. Mediation will work when there is uncertainty of winning by any one party. इसलिए जो judgment आया यही सबसे उत्तम है. This puts an end to the whole issue. Assertive 1% that wants to open the wounds again. They do not operate only by the verdict of the court. Mr. Ohana, you as a Speaker of Knesset, how do you see upholding the democracy? And I'm talking at a time when there have been protests, and in fact, the issues between the two countries are sort of on the same level. We want Israel to be a better democracy, which means more decisions should be taken by the public through their representatives. And unfortunately, we have an unbalanced situation, and we are trying to balance it. As you mentioned, it is a matter of dispute, and we have protests as we have in democracies. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. And a quick look at what's making headlines from across the globe. North Korea in the latest tested its latest underwater nuclear attack drone in a bid to give a stern warning to its enemies who had been engaging in military drills. Here's a quick 1-minute report. North Korea's state news agency reported the second test of what it described as an underwater nuclear attack drone. The drone was put into the sea off the country's east coast on 4th April, after which it travelled around for 71 hours and 6 minutes before detonating its warhead just outside a port. The images on your screen show a torpedo-shaped object, and a plume of water suggests an underwater explosion. Watch closely how the plume of water is rising from the weapon towards the sky. North Korea reported a first test of an underwater drone of this kind in late March. Saturday's report came after weeks of protests from Pyongyang against joint military exercises carried out by the US, South Korea and Japan. Agency report, Republic TV. And we slip into a very short break. Coming up on the other side, we'll get you more as BJP leader Kailash Vijayvargiya quotes controversy, makes sexist comments, says girls wearing short dresses are shoot nakhas.
And the all-important BJP meet on Karnataka underway at Nadda's residence, party to decide on candidates for upcoming polls. 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा, जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है। नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास। मैनेजर्स कोचेस जो थे उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है। मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते। नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं। फिर हमने खुद वहाँ मेरा टीम ने स्टेज पे क्रिस्टन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया। 13,000 placements last year. At Amity, we are committed to nurturing passionate, hardworking and proactive professionals. The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of nation first. Dragging back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are with several cases of corruption and disproportionate assets. This will ensure that at a local level, no officer can go about saying, hey, I've come to inspect you, without the system approving it. The India developmental model is the right model which the world can follow, and that is the opportunity that we have before us. I believe that you are soaked in the philosophy of nation first. जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। Sharad Pawar strikes a discordant note once again, says JPC on the Adani issue will not be effective. From Savarkar to the Adani issue, Pawar blunts the opposition card, a big strike on opposition unity attempt. हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। In Hyderabad, Prime Minister takes on the KCR government in an unrelenting attack, says corruption and dynasty politics go hand in hand. Yet another setback for the Vadra Congress. C. Rajagopalachari Rajaji's great-grandson joins the BJP months after quitting Congress. BJP leader Kailash Vijayvargiya makes a sexist remark, says girls wearing short dresses are surpanakhas. President Murmu takes off from Tezpur IAF station for her maiden Sukhoi sortie.
Hello and welcome, ladies and gentlemen. My name is Ankit Prasad, and we start off with one more break from the goal of opposition unity. While the opposition has attempted to stall the parliament proceedings with a demand for a JPC probe in the Adani issue, Sharad Pawar, senior opposition leader, head of the NCP, has struck a discordant note. Sharad Pawar says that a Supreme Court panel will be more effective than a JPC. He has also dismissed the Hindenburg report, and he has claimed that in the whole process there appears to be a targeting of the Adani group. Sharad Pawar has also spoken out against disruptions being caused as a result of the political fiasco in relation to the Hindenburg row and its report on the Adani group. Since Sharad Pawar made these remarks, there are a number of opposition leaders, particularly from the Congress, who have attempted to downplay the former UPA minister, former Maharashtra chief minister and NCP Supremo's remarks by terming it as a personal view that they will persist with their joint parliamentary committee probe demand into the Adani row. But what is abundantly clear is that there is a discord within the opposition. Let's listen in to what Sharad Pawar said and also some of the reactions. JPC म्हणजे काय? जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी. पार्लमेंटमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा दोन सभागृह आहेत आणि या दोन्ही सभागृहातल्या सदस्यांची ही समिती साधारणतः JPCचं फॉर्मेशन कसं होतं, या पक्षाच्या सभासदांची संख्या अधिक आहे त्यांना अधिक जागा मिळतात. आता उदाहरणार्थ 21 लोकांची JPC असेल तर त्याच्यामध्ये 15 लोक हे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणजे भाजपचे असतील आणि 6 ते 7 लोक अपोजिशनचे असतील. तर ज्या कमिटीमध्ये अपोजिशनचे लोक इतके कमी आणि सत्ताधारी पक्षाची संख्या इतकी अधिक, याचा अर्थ ज्याची चौकशी नीट करावी अशी आपली अपेक्षा आहे त्या संवेदनेची शंका व्यक्त करायला संधी आहे. याऐवजी सुप्रीम कोर्टाने एक कमिटी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला ज्याच्यामध्ये निवृत्त सुप्रीम कोर्टचे जजेस आणि इतर काही लोक आहेत. सुप्रीम कोर्टाने आणखीन एक गोष्ट केली की किती दिवसात त्याने अहवाल द्यायचा, टाईम पिरियड, याही संबंधीची सूचना केली. आणि माझं मत असं आहे की मी काही JPC सरसकट विरोध करत नाही. यापूर्वी JPC होती, काही JPCचा मी स्वतः चेअरमन होतो. पण JPC बहुमताच्या संख्येवर त्या ठिकाणी तिचं फॉर्मेशन होणार असल्यानं JPCपेक्षा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी अधिक उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल असं माझं मत आहे. पॉईंट असा मला हिंदुस्थान कोण हे माहिती नाही. त्यांचा डिफॉल्ट वर्तमानपत्रात मी वाचला. एक कंपनी परदेशातली ती या देशातल्या परिस्थितीच्या संबंधीची काही भूमिका घेतली, त्याच्यावर किती आपण लक्ष केंद्रित करायचं याचा विचार केला पाहिजे. त्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टाची कमिटी ही अधिक प्रभावी ठरेल असं मला वाटतं. कुठलीतरी बाहेरची एखादी संघटना ती आम्हाला सांगणार यापेक्षा या देशातल्या सुप्रीम कोर्टाने आम्हाला सांगितलं तर ते लोकांच्या अधिक विश्वासाला पात्र ठरेल. एक जमाना ऐसा था कि उस जमाने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे. आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं. और दूसरा देशवासी को ये पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है. इसलिए आजकल अदानी अंबानी नाम लेते हैं. तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें
इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये 3 मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे, और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। So you just heard in detail Sharad Pawar's views on the matter, also his opinion on whether or not we should trust Hindenburg on something or whether the Supreme Court should perhaps control a probe into the Adani issue. Regardless of this, it has set the cat amidst the pigeons as far as the opposition is concerned, and a number of opposition leaders are attempting to clarify and interpret Sharad Pawar's remarks. There is also the law minister who has spoken on the matter. Let's listen in to the reactions to the NCP president's words. देखिए, मैं तो इस विषय में अंदर में अभी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके मामला देख रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए, वो पॉलिटिकली फेल हो गए हैं, तो फिर चमकाने के लिए विवादित चीज को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है। हर चीज का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। मला वाटत नाही की पवार साहेबांनी क्लीन चिट दिली आहे। पवार साहेबांनी क्लीन चिट दिली नसून चौकशीचे जे पर्याय आहेत त्या संदर्भात त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे। आम्ही सगळे जेपीसीचा आग्रह धरतो आहे आणि पवार साहेबांचं असं म्हणणं आहे की जेपीसीमध्ये चेअरमन त्यांचा असतो, जेपीसीमध्ये सदस्यांचं बहुमत त्यांचं असतं, त्यातून काय निष्पन्न होणार? एका विशिष्ट कालमर्यादेत न्यायालयीन चौकशी हा पर्याय त्यांनी सुचवला। मग तुम्हाला जेपीसी हवी आहे का सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांकडून चौकशी हवी? आता देशाच्या गुन्हेगारांना ज्या पर्याय मार्गातून शिक्षा मिळेल असे कोणते पर्याय चालू शकतात, पण जेपीसीवरती विरोधी पक्षांची जी मागणी आहे ती ठाम आहे। I think this is an individual personal opinion of Shri Sharad Pawar ji, who is a senior leader in the opposition. I think the united opposition altogether had decided that there should be a JPC form to go into the issues relating to the Adani issue, and that is why when this was unitedly decided, in which the NCP was also a part of it, I think the entire opposition should abide by it. But in spite of that, he still feels his opinion, as he has said, that this is his individual opinion. So, well, people may have opinions, but when the opposition together takes a call, I think that should be followed by each and every constituent of the opposition. देखो, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। आपको याद होगा कि जब भी कोल स्कैम हुआ था, ऐसा जब आरोप हुआ था, तब भी कोर्ट की कमेटी बिठाई गई थी। तब भी अपोजिशन के कहने के आधार पर उस समय भी जेपीसी की गई थी। तो पवार साहब का व्यक्तिगत वो मत हो सकता है, लेकिन मोदी जी अदानी के मैटर में क्यों डर रहे हैं, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो सकता है। हम जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस ने ये भूमिका रखी। हमारे साथ कई दल हैं जिन्हें अदानी के बारे में सवाल पूछे हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि शरद पवार जी ने ये क्यों कहा है, हमें हमारा इशू नहीं है, वो शरद पवार जी का व्यक्तिगत मत हो। So you just heard a range of reactions there to what Sharad Pawar had to say on the Adani issue from the opposition. Some amount of damage control, some amount of straddling the thin line between what is a personal remark and a public opinion. But Sharad Pawar clearly has reasoned his views on it, and the law minister in response has said that the entire Adani issue is a figment made up by the Congress to relaunch Rahul Gandhi's career. So clearly a lot having been said. You can read more about it on republicworld.com. This is a smoldering controversy that we're following very closely, viewers. For the moment, let's move on to the top stories from around the country.
President Draupadi Murmu performed a sortie on a Sukhoi 30 MKI fighter jet from the Tezpur Air Force Station today. Earlier, President Murmu was accorded a guard of honor on her arrival at the Tezpur Air Force Station. The Assam police arrested 3 leaders of the banned organization, the Popular Front of India and the Campus Front of India in Assam's Barpeta district. The police also recovered cash worth 1.5 lakh rupees, 4 mobile phones and a pamphlet of Social Democratic Party of India, the SDPI, in their possession. Telangana Chief Minister KCR skipped Prime Minister Modi's event in Hyderabad today despite being invited. Notably, Prime Minister Modi flagged off the Vande Bharat Express between Secunderabad and Tirupati in Telangana. He will also inaugurate and lay the foundation stone for projects worth 11,300 crore today. Ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Telangana, several Telangana Congress leaders were detained by the police, including Youth Congress President Shiv Sena Reddy, NSUI President Balamuri Venkat, Dalit Congress President Pritam, Women Congress President Sunita Rao. This comes as the Youth Congress has called for a protest during the visit. A Delhi police head constable shot himself dead early morning. The Delhi police said that Imran Muhammad has shot himself with his official weapon. They further said that he was immediately shifted to the Bada Hindu Rao Hospital, where he was declared brought dead on arrival. A major fire erupted at a PVC market in Delhi's Tikri Kalan today. Nearly 25 fire tenders were immediately dispatched to the spot to douse the blaze. As per the official statement, the fire was brought under control and the cooling operations were underway. In another episode of unruly behavior on board an aircraft, a 40-year-old allegedly inebriated and drunk passenger on a Delhi-Bengaluru Indigo flight has been arrested for trying to open the emergency door flap. According to Indigo officials, the unruly passenger has been handed over to the CISF upon his arrival in Bengaluru. Former UPA IT Minister Kapil Sibal attacked the centre over the fact-check provisions of the IT amendment rules, saying and asking whether now the government will decide what is fake. This is after Union Home Minister Amit Shah said that democracy is not in danger. A poster war had erupted between the Tamil Nadu government and the Governor R.N. Ravi. According to sources, anti-governor posters with hashtags Get Out Ravi and Dictator Ravi were seen at various places in Chennai. This comes after the governor has been accused of stalling a passage of various bills. Bharatiya Janata Party West Bengal President Shukanta Majumdar, in a scathing attack, alleged that the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress is doing everything to insult the tribal community. According to the BJP leader, some scheduled tribe community women who had joined the BJP were allegedly forced by the TMC to rejoin the ruling party and perform a parikrama as a punishment. Viewers, just a short while ago, the Prime Minister was in Hyderabad, where he flagged off the 11th Vande Bharat Express and also laid the foundation stone for a revised terminal or the railway station at Secunderabad. In the process, one thing was very overwhelmingly in the air, which was the absence of KCR at the Prime Minister's event. The Telangana Chief Minister was not present, and the Prime Minister also made a number of attacks on dynasty politics and corruption, among other things. Let's listen in now to some reactions from the Prime Minister's fiery speech in Hyderabad. हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे,
उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद, वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा न आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। Viewers, now access to the most commonly used method of abortion in the United States plunged into uncertainty following conflicting court rulings over the legality of the abortion medication mifepristone that has been widely available for more than 20 years. Take a look at this report. A US federal judge has halted the FDA approval of abortion pill.
causing a row of political reactions across the country. This comes as the US continues to witness massive protests across the states over the abortion rights of women in the country. Agency report, Republic TV. And there's a lot of news coming up, viewers. It's been another setback, 3 days, 3 setbacks for the Vadra Congress. Indian freedom fighter C. Rajagopalachari, Rajaji's grandson, C.R. Kesavan, has joined the BJP. And also, BJP leader Kailash Vijayvargiya has made a sexist remark for which he is being panned. He says that girls wearing short dresses are surpanakhas. We'll get you all the reactions on this after a short break. Stay with us. Mr. Ohana, you as a Speaker of Knesset, how do you see upholding the democracy? And I'm talking at a time when there have been protests, and in fact, the issues between the two countries are sort of on the same level. We want Israel to be a better democracy, which means more decisions should be taken by the public through their representatives. And unfortunately, we have an unbalanced situation, and we are trying to balance it. As you mentioned, it is a matter of dispute, and we have protests as we have in democracies. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही, देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है। ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे, तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज। आपने 3 गोल्ड जीते, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करा, जब पोडियम पे नंबर 1 स्पॉट में खड़ी हूँ और नेशनल एंथम ही नहीं है। नेशनल एंथम नहीं है हमारे पास। मैनेजर्स, कोचेस जो थे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि भी हमारा कोई गोल्ड आ सकता है, हमारा नेशनल एंथम भी बज सकता है। मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया और 3 गोल्ड मेडल भी जीते। नेशनल एंथम नहीं थी हमारी, वो रिकॉर्डेड जाता है ना, वो आई नहीं। फिर हमने खुद वहाँ, मेरा टीम ने स्टेज पे ब्रिक्सटन पे मैं और नीचे से मेरा जो टीम थी पूरी, उन्होंने नेशनल एंथम गाया। Sports update now, viewers. The Lucknow Super Giants moved to the top of the points table in the IPL after successfully chasing 122 runs in just 16 overs for their second successive win at home. The hosts beat the Sunrisers Hyderabad to register their second win of the season in 3 matches at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Stadium. Spinners played a vital role for the Lucknow Super Giants as Krunal Pandya picked up 3 wickets and Amit Mishra picked up 2 to restrict the Sunrisers Hyderabad to just 121 in 20 overs. Opting to bat first, the Sunrisers did not get to the best of starts as Krunal Pandya dismissed opener Mayank Agarwal for just 8 runs. All-rounder Krunal Pandya was happy that all the hard work that he had put in over the last 4 months paid off in a crunch IPL 2023 match for Lucknow Super Giants against the Sunrisers Hyderabad. Krunal shone with 3 wickets in his 4-over spell on a slow pitch in Lucknow on Friday. And a lot coming up this Saturday, viewers. In Hyderabad, Prime Minister Narendra Modi has taken on the KCR government in an unrelenting attack. He says that corruption and dynasty politics go hand in hand. More on that coming up. And heavy criticism of BJP leader Kailash Vijayvargiya for his sexist remark. He said girls wearing short dresses are surpanakhas. We'll get you more on this in just a few seconds. Stay with us.
सभी देश के जन जन तक सही सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब नेशन फर्स्ट होता है तब हमारे संकल्प भी बड़े होते हैं और उनको सिद्ध करने के प्रयास भी व्यापक होते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने भी ठान लिया है हमारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी अपने कदम और भी तेज करेगा। When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. Mediation will work when there is uncertainty of winning by any one party. इसलिए जो judgment आया यही सबसे उत्तम है. This puts an end to the whole issue. Assertive 1% that wants to open the wounds again. They do not operate only by the verdict of the court. Mr. Ohana, you as a Speaker of Knesset, how do you see upholding the democracy? And I'm talking at a time when there have been protests, and in fact, the issues between the two countries are sort of on the same level. We want Israel to be a better democracy, which means more decisions should be taken by the public through their representatives. And unfortunately, we have an unbalanced situation, and we are trying to balance it. As you mentioned, it is a matter of dispute, and we have protests as we have in democracies. When we see that the masterminds, the plotters of this attack are still unpunished, they are still roaming free, what can India and Israel do together to ensure that the plotters, the mastermind of this attack are punished? Everyone that took part of the terror attacks pays the price, a very heavy price. So we are still waiting for those who committed, those who sent, those who operated those terror attacks to be brought to justice. And indeed, we need to bring very serious pressure from all the world, from all the free world who stands against terrorism. Hello and welcome. Just letting our viewers know that India's biggest news event is back. The third edition of the Republic Summit will be held in the national capital this month. The biggest names, the biggest newsmakers, the biggest agents of change and transformation in India will be at the Republic Summit once again this year. So stand by for what will be by far India's biggest news event by miles. मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की जो बात हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। Sharad Pawar strikes a discordant note once again, says JPC on Adani issue won't be effective. From Savarkar to Adani issue, Pawar blunts opposition card, a big strike on opposition's unity attempt. हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। In Hyderabad, Prime Minister takes on KCR government in an unrelenting attack, says corruption and dynasty politics go hand in hand. Yet another setback for Vadra Congress. Rajgopalachari's great-grandson joins BJP months after quitting.
BJP leader Kailash Vijayvargiya makes sexist comments, says girls wearing short dresses are Shurpanakhas. President Murmu takes off from Tezpur IF station for her maiden Sukhoi sortie. And we begin this edition of the News Wheel with this sexist and absolutely misogynistic comment coming in from a senior BJP leader, Kailash Vijayvargiya, who has said that girls who wear objectionable clothes, short clothes, revealing clothes, look like Shurpanakhas. This is what he said. Let's listen in. मैं जब निकलता हूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को, बच्चों को जब झूमते हुए देखता हूँ तो सच में ऐसी इच्छा होती है कि उतर के और इनमें 5-7 ऐसे लोग नशा उतर जाए। सच में कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के हनुमान जयंती में झूठ नहीं बोल रहा। और लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्णखा लगती है। सच में अच्छे सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, तो जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। This comment inviting a lot of anger and outrage. This sexist comment that BJP Neta Kailash Vijayvargiya has made has also triggered a political storm. Let's listen in to some Congress reactions coming in. पूरे देश के महिलाओं का इसका विरोध किया जाना चाहिए। और वैसे ही खट्टर जी ने कहा था कभी कि अगर आज़ाद होना चाहती तो नंगी घूमे। इन लोगों की मानसिकता महिला विरोधी है और आरएसएस तो महिला विरोधी है ही है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि पति का बात अगर पत्नी ना माने तो तलाक दे सकता है। वो तो ये कहते हैं कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये लोग तो महिलाओं के बहुत ज़्यादा खिलाफ में हैं, लेकिन महिलाओं को समझना चाहिए। बिहार लोकसभा के एक मंडल अध्यक्ष अमित सरकार को रात को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। ये दीदी और भतीजे, पीसी और भाईकों का खेला चालू हो गया। वो सोच रहे हैं कि इससे पहले चरण के चुनाव के पहले हम आतंक फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर बैठा देंगे, मतदाताओं को वोट डालने नहीं देंगे। दीदी, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उन्होंने कहा है कि महिलाएं जब साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते उनको लगते हैं राक्षस की तरह। आज हम लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को असम्मान कर रही है, किस हद तक असम्मान कर रही है। भारत आगे बढ़ेगा ना भारत पीछे जाएगा। भारतीय नारी का अपमान